Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Nilofer Yusuf, Assistant Professor Pharmacology, Akhtar Said Medical and Dental College, here to demonstrate today's lecture, which is about drug transport mechanisms. It is very first lecture after introduction to journal pharmacology concepts, and I hope you have got the journal concepts as there were 7 lectures regarding them, and Sir Said really focused on each and every point. Learning objectives of today's lecture are by the end of the lecture, students should be able to know and reproduce definitions and concepts related to permeation, active and passive diffusion, facilitated diffusion, pinocytosis, endocytosis, and you should be very much clear about Fick's law of diffusion. So, dear students, after 7 lectures of journal pharmacology, you should be well aware of what is drug permeation. First of all, the thing is, pharmacology is all about drugs. You know, whether the substance is prodrug or in active form, it have to enter in our body. Once being taken by any route of administration, after entering in our body, it have to pass through various membranes, various barriers within our body to reach from one cell to another and to give its therapeutic effect for the purpose it is being used or taken. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रग परमिएशन है क्या. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पर means through and mere to pass. Simply, drug helps itself to spread through something or pass through the pores or any interstitial spaces present within our body tissues. According to Sir Said's definition, which is well authentic and you have to just ratify it, it is drug permeation is defined as the movement of a drug molecule or drug molecules across the body membranes by means of aqueous diffusion, lipid diffusion, transport by special carriers, or by exocytosis or endocytosis. I'm pretty sure that you are very well aware, acquaint of meanings of words such as aqueous diffusion, lipid diffusion, or endocytosis, exocytosis. So the movement refers to the transfer of a drug within the body. So reading the exact lines, it refers to the movement of drug molecules in the body. First, it is absorbed from its site of administration into the blood. For example, we have taken the drug orally. It have to be absorbed somewhere in the blood to produce its therapeutic effect. So after absorption comes distribution. Once it is absorbed in some medium of the body, it has to be distributed to the site of action between different compartments of the body. And once our therapeutic effect is obtained or the extra amount needs to be excreted out, it needs to be get removed from our body. This is a figure which is showing how we take, after the uptake of the drug, how it is absorbed into the blood after uptake from stomach and intestine. हमने drug ली, it goes into our stomach, and intestine, and afterwards it get absorbed into the blood. Then it is distributed into the various tissues and the compartments of the body, and it is said alpha phase. Then comes the elimination. I'm repeating, alpha phase is important. Somebody can ask you in exams that which is alpha phase or which is beta phase. So you should be knowing that after absorption, once drug is distributed into the body, it is the alpha phase. Then comes elimination, which is also can be said as beta phase. Elimination from body by biotransformation. ठीक है जी.
केमिकल ऑल्टरेशन हो जाती है, जिसमें सर ने बहुत क्लियरली आपको बताया था बायो ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, इनएक्टिव ड्रग एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो या फिर एक्सक्रेशन बाय किडनी, दिस इज बीटा फेज, जिसमें एलिमिनेशन एक्सक्रेशन दोनों आएंगी। बच्चे बात वहीं की वहीं रह जाती है, एब्जॉर्प्शन भी होनी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी है, एलिमिनेशन भी होनी है, एक्सक्रेशन भी होनी है, और सबके लिए ड्रग को पास करना है मेम्ब्रेन्स के थ्रू। एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में जाना है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाना है, वेदर थ्रू कैपिलरीज और एनी अदर मीडियम, तो इट हैज टू गेट परमिएटेड, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा ये हम आज करेंगे, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल क्वेश्चन। आप 2019 का पेपर उठा लो, यूएचएस का 2020 का उठा लो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। देखने में ऐसे ही लगता है बोरिंग सा है, इट्स सो इजी, हम बायोकेम में पढ़ चुके हैं, हम फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, मगर इट इज़ of utmost importance in pharmacology, in pharmacology as well, and do come in exams. But in this slide, you can see that in previous slide, the drug was in capillary, but now you can see it is in different interstitial space में चली गई है capillary से, तो ये सारा किसी process के through हुआ होगा. Let's see what is it. So the drug permeation, the absorption, distribution, metabolism, and excretion of a drug involve its passage across cell membranes. In this picture, you people are seeing that there are different modes of drug transport mechanisms taking place, such as you can see extracellular से intracellular कैसे एक चीज pass on हो रही है. You can on the very left side you can see passive diffusion of water soluble drugs through aqueous channels. So there are pores, they are aqueous pores from which drug is being easily transported from extracellular medium to intracellular. Now, come in the middle, it is seen that passive diffusion of lipid-soluble drugs via hydrophobic bonding with membrane lipids. So the drug is hydrophobic. So we are using the lipid compartment of the drug, of the membrane for the passage of drug from extracellular to intracellular. Then comes active transport and facilitated diffusion via membrane carrier proteins. So look at this. There is, on the right side, there is a big shape which is showing the drug is being facilitated by joining some kind of carrier which helps the drug from extracellular medium to the passage of drug from the extracellular medium to intracellular medium by help of some specialized transport mechanisms, transport carrier, or some help. So summarizing our previous diagram, passage of drugs across cell membrane is through passive diffusion, simply from high gradient to low gradient, or through simply through channels. There is no energy is being used, no force is being used. There are aquapores from which water soluble drugs are being transported. Then there are lipids which help lipid soluble transport through membrane, and then specialized specialized transport in which various carriers are present in form of enzymes, proteins which help drug transport through the membrane. So specialized transport is through via carrier transport. It can be active transport which needs energy such as ATP, and then facilitated diffusion by the help of some kind of carrier mediated, means some kind of protein, enzyme which or channels which help passage of drug from one medium to another. Then comes pinocytosis, exocytosis, and exocytosis is the principal mechanism of transmitter release in the peripheral and CNS. You must have read this about this in your previous biochem or physiology. Pinocytosis में क्या होता है? एनगल्फ होती है ड्रग, सेल मेम्ब्रेन एनगल्फिंग होती है, उसमें जो भी मटेरियल होता है उसके वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसने रिलीज होना है, वो इन द एंड
बाहर जाके वही वेसिकल्स बाहर जाएंगे और वो बस्ट आउट हो जाएंगे और वो जो ड्रग है वो हमारी सेमिनेट हो जाएगी जो हमें चाहिए था. Look at this. This is how endocytosis is taking place. These are drug molecules being engulfed by cell membrane. It turns into a vesicle and then release afterwards. So pinocytosis is derived from a Greek word pinyan, which means to drink. But we cannot say that pinocytosis help us for the engulfing large molecules such as proteins. So for that we need active transport, means energy requiring transport, which is related to ATP. ठीक है? Pinocytosis contributes little to the transport of drugs. Examples regarding pinocytosis is vitamin B12 plus intrinsic proteins across the gut wall, iron plus transferrin into hemoglobin for the synthesis of RBCs, and insulin also crosses blood-brain barrier through engulfing process pinocytosis. So, although it contributes little, but still it is very, very important. Look at this. Acha, so it comes then comes specialized transport such as carrier transport, in which we discussed that active transport and facilitated transport. We have discussed about pinocytosis. Then comes exocytosis. But you look at this. Here comes the carrier proteins. How facilitated proteins diffusion is being is taken place. Only carrier is needed. No energy gradient is used for it. Whereas active transport some energy gradient, and mostly it uses in the form of ATP. Carrier transport is not governed by fixed laws of diffusion and is capacity limited. हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स लॉ अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स लॉ ऑफ डिफिजन इन पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. नो, इसका अपना मैकेनिज्म होता है और ये कैपेसिटी लिमिटेड होता है. वंस एंजाइम्स और द ट्रांसपोर्टर whatever the thing is helping in transporting, whether enzymes or proteins are once fully occupied, then no more transport is able to take place. Look at this. So the active transport is saturable and inhibitable. Once the receptors or the carrier proteins are saturated, then no more transport is going to take place. May move a molecule against its diffusion gradient, for example, sodium pump. ज़रूरी नहीं है कि एक जो चीज़ है लो से हाई की तरफ जाए. अगर एटीपी हमारे पास एनर्जी है तो वो जिधर यूज रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ही लेके जाएगी ग्रेडियंट को. Which is also helping us to demonstrate the energy gradient active transport of carrier mediated active transport of drug, in which energy is being used in the form of ATP. And look how ATP is being converted into ADP, and drug is shown in as letter D is being transported from extracellular to intracellular compartment. This has facilitated diffusion, transfers molecules down a diffusion gradient from GI lumen into epithelial cells. उसमें क्या था, इसमें ये है कि फ्रॉम हाई टू लोअर में आ रही है. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन ग्रेडियंट के थ्रू आ रही है, मगर हमें एक्टिव में सिर्फ एनर्जी चाहिए. वो किसी भी किस्म का हो सकता है. ठीक है, वो कम से ज़्यादा हो रही थी, मगर इसमें क्या है, बाहर ज़्यादा है. एनर्जी के फैसिलिटेटेड डिफियन कैरियर के थ्रू कैरियर मीडिएटेड है और वो कम से ज़्यादा में आ रही ज़्यादा से कम में आ रही है. ठीक है, carrier mediated drug transport is important is such as blood-brain barrier, GIT, renal tubules, biliary tract, placenta. Carriers are there, selective membrane carriers such as peptides, glucose. Many drugs are also use these carriers. They are less selective membrane carriers bind ATP such as B glycoprotein,
This is one of the important question in form of MCQs can also come and ACQs too. Multi-drug resistant associated proteins transporters. They do not bind protein but use ion gradient for transport energy. So it is also used as uptake of neurotransmitters across nerve endings. So these drug transporters are specialized for expelling foreign molecules. It is present in renotubular brush border membrane, in bile canaliculi, in astrocytes, food processes, in brain microvessels, and in GIT. These drug transporters are responsible for multi-drug resistance in the neoplastic cells. What they do, हम क्या ये क्या resistance cause कर देते हैं, हम drug देते हैं multiple किस्म के, तो ये क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस कॉज कर देते हैं, ये उसका इफेक्ट ही नहीं होने देते, ये उस ड्रग को बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं. जब ड्रग ही नहीं रहेगी तो वो वर्कआउट कैसे करेगी, अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैसे देगी. Look at this picture and see how P glycoproteins and other transporters are in biliary canaliculus and lumens are transporting drug from one medium to another. How they are expelling them out and how they are allowing them to enter in their compartments. Now the passive diffusion. Passive movement of molecules from an area of greater concentration to an area of lower concentration. Passive diffusion. Lipid-soluble drugs by diffusion directly through the lipids, and water-soluble lipid-insoluble drugs by diffusion through the aquaspores formed by special proteins, aquaporins that transfers the lipid. So अब आप देखो एक सेल मेम्ब्रेन है, उसमें ये एक्वापोरिन्स भी हैं, एक्वास्पोर्स हैं और लिपिड सॉल्युबल लिपिड भी एम्बेडेड है, जो अब ये दोनों चीज़ों को कर रहा है. अगर इफ अ ड्रग इज वाटर सॉल्युबल and lipid insoluble, so it will get through the membrane through aquaporins. But if the drug is lipid soluble and hydrophobic, so it will use lipid medium to transport through the cell membrane. ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं सिंपल पैसिव डिफ्यूजन. लिपिड स्ट्रक्चर है, लिपिड बायलेयर है, लिपिड लिपिड लिपिड, ऐसे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर नहीं, एक्वापोर्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. As for the drug to pass through and reach organs such as brain, testes, there are large aquaporins, and the drug has to reach these mediums through these drugs. So it is very very important for a drug to be water soluble to reach sites such as testes, brain. ठीक है जी. So लिपिड सॉल्युबल ड्रग तो हो गई, सिंपल डिफ्यूजन में चैनल प्रोटीन भी आ गया, ठीक है. वाटर सॉल्युबल ड्रग्स व्हिच आर लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स यूज एक्वापोरेंस. their diameter aquaporin's diameter is about 0.4 nanometers. So drugs usually, but most of the drugs exceed their size from to 1 nanometer. 0.4 और nanometer और 1 nanometer में 0.6 का डिफरेंस आ रहा है. तो क्या होता है, उसके लिए हम चैनल प्रोटीन्स ले लेते हैं, हम हेल्प ले लेते हैं, कैरियर ले लेते हैं. ठीक है जी. This diagram, so symbol it's shown in this diagram that passive diffusion of a drug soluble drug through an aqueous channel or pore. You can see it, and how passive diffusion of a lipid soluble drug dissolved in a membrane. It is through lipid bilayer structure, and one lipid water soluble drug is being transported through aqua. Actually, this is a comparison slide of active and passive transport, in which you can see that passive transport is taken place from an area of high concentration, okay, whereas active transport is needing some kind of push, which is in form of energy. ATP, energy from ATP is used to move a particle through a protein against the direction of diffusion. If you focus on this, you can see that how it is showing that a simple rock is coming and it is simple passive diffusion against gravity, whereas facilitated diffusion is also against coming against gravity, but it is just
a little helping hand is there, whereas active में हमें क्या है, प्रॉपर एक मशीनरी मिली हुई है एंड ऑटोमोबाइल है जो एनर्जी कंज्यूम करके अगेंस्ट ग्रेडियंट जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इससे आई होप आपका क्लियर हो। जी, तो नाउ कम्स फिक्स लॉ ऑफ डिफियन। फॉर्मूला इज फ्लक्स इज इक्वल टू C1 minus C2 into area into permeability coefficient divided by thickness. Or simply we can say these are the factors affecting diffusion, simple diffusion of a drug through membrane. So C1 is high concentration. From the area of high concentration to the area of lower concentration, area is the area of diffusion, surface area of the diffusion, whether it can be any surface area, lung, GIT, anything, and its thickness and permeability coefficient is actually its coefficient, its ability to cross water lipid membrane solubility, water lipid solubility. So surface area, drug absorption is faster from organs with large surface area. For example, small intestine से ज़्यादा तेज absorption होगी. In comparison to stomach, lung से होती है. Thickness of the membrane, drug absorption is faster from organs with thin membrane, of course, barriers such as the lung compared to those with thick, such as the skin. Now comes permeability coefficient, which is represented by P. It is the lipid aqueous coefficient, partition coefficient. ठीक है? The ratio of a drug solubility in lipid membrane is compared to water. For example, a large P oil water means that a drug is highly soluble in lipid and will cross membrane easily. जितनी बड़ी P coefficient होएगा हमारा permeability coefficient की वैल्यू होगी, उसकी lipid solubility उतनी ज़्यादा होगी. तो it is the ability of a drug to pass a lipid membrane. The ability of the drugs to move from aqueous to liquid medium and vice versa depends upon the ionization of drugs, pH of the medium. अभी ये हम डिटेल में करेंगे absorption वाले लेक्चर में, but still we should be knowing that mostly what सर ने भी आपको ये बता दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है कि वाटर soluble जो होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं. ठीक है, if the drug is charged, it is lipid insoluble and not able or unable to cross lipid membranes. ठीक है, so I remember example of such side during last year's lecture. He did, जिस पे चार्ज होता है ना वो सीधा बाहर की तरफ जाता है. ठीक है, तो चार्ज है वो जाता जाएगा, उसकी मेम्ब्रेन्स के अंदर एंट्री नहीं होगी और फाइनली वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा. तो याद रखना कि वाटर सॉल्युबल water solubility is very much important and needed for excretory stage of the drug, and however it should be ionized. pH medium में भी होता है. अगर acid drug acidic pH की है तो it would be more absorbed and trapped in basic medium, and so vice versa. A drug passes through membrane more readily if it is uncharged. Repeating the same thing, ionization of drugs may markedly reduce their lipid solubility and to permeate membranes. An ionized molecule is relatively water soluble and lipid insoluble. It is a very important example of a weak acid, in which you can see that neutral form of acid is lipid soluble and unionized and is being transported from one medium to another as lipid membrane is there. मगर जैसे वो irreversible फॉर्म में है, वो प्रोनेटेड फॉर्म में भी जा रहा है, और आप वहाँ पे देखो जो उसका जब प्रोनेटेड फॉर्म आ जाती है वो चार्ज्ड हो जाता है, तो वो लिपिड मेम्ब्रेन से बाउंस हो गया है, वो अंदर एंटर नहीं हो सका. ठीक है, तो for passing through membranes, lipid solubility is very important. Magar for action, then again for excretability and action, water solubility is also important.
चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने लिपिड मेम्ब्रेन में ड्रग को एब्जॉर्ब करवाना है तो इट शुड बी अनआयनाइज्ड। वंस इट इज विद इन द सेल it can get ionized, it can get charged. In previous slide, बच्चे we discussed about weak acid. Now we are talking about weak base. You can see it is in reversible form. ठीक है, irreversible condition में exist कर रहा है अपना protein proton और unprotonated form में। आप देखो unprotonated form जो है ना वो लिपिड सॉल्युबल है मगर और न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे इसको प्रोटॉन मिल जाता है ये लिपिड इनसॉल्युबल हो जाती है। ठीक है, उस एसिड में क्या था, प्रोटॉन दे रहा था एसिड और इसमें प्रोटॉन ले रहा है वीक एसिड। तो न्यूट्रल फॉर्म इज सेड टू बी वी is without proton. Now let's read what is written over there. Weak acid will be in the lipid soluble form at acid pH. ठीक है, किसमें है weak acid lipid soluble, जिसमें acidic pH है। Whereas same goes for basic drug will be in the lipid soluble form at alkaline pH. But हमें एक्शन के लिए ट्रैपिंग के लिए ऑपोजिट मीडियम चाहिए, एब्जॉर्प्शन के लिए सेम मीडियम चाहिए और एक्शन और ट्रैपिंग के लिए ऑपोजिट मीडियम चाहिए। Repeating, weak acid will be in the lipid soluble form at acid pH. Basic drug will be in the basic soluble form at the alkaline pH. Effect of the pH of the medium. Most drugs are either weak acids or weak bases. Their state of ionization varies with pH according to the Henderson-Hazelbeck equation. Weak acid is a neutral molecule that can reversibly dissociate into an anion and a proton. You can see that HA is representing neutral aspirin, which is in neutral and can easily lipid soluble, and it dissociated into its protonated form, releasing a proton and aspirin anion. Its pK is 3.5 on at 3.5 pH. Aspirin is totally absorbed, fully absorbed, having 50% ionized form and 50% ionized. This is the diagrammatic representation of this last slide. That neutral form, which was without any charge, was lipid soluble, and after it is dissociated, being dissociated into an ion and cation, it is lipid insoluble. So, a weak base is a neutral molecule that can form a cation by combining with a proton. Again, this is diagrammatic representation of the previous text. How the thing is, I must say, how it is soluble, and weak base is soluble and insoluble. So, the Henderson-Hazelbeck equation is pH is equal to pK plus log unprotonated species over protonated form of the drug. Here you can see that applying the Hazelbeck equation, we can say that pH is equal to pK, which is constant, plus log unprotonated form over the protonated form. Here is the Hazelbeck equation for the weak base. Protonated is being unprotonated, then applying it on the formula. You can see pH is equal to pK plus log over unprotonated over protonated. For weak acids, it is anion over neutral form, whereas for bases, it is neutral over protonated form. Peter, you can see in this diagram the pH in the stomach allows for the passive absorption of acids but not weak bases. ठीक है, टिश्यू की 7.4 है, तो you can see that acid is easily being absorbed.
The lower the pK, the stronger the acid. Higher pK, the stronger the base. ठीक है जी. So you can take the example of aspirin. It is a weak acid and its pH is 3.5. Sir Said has already discussed this thing that when pH of a solution is the same as the pK of a drug within it, then the drug is 50% ionized and 50% is unionized. When pH is less than pK, the protonated form HA and B pH प्लस प्रीडोमिनेंट. ठीक है, अगर pH 1 लेस कर देंगे तो उसमें प्रोटोनेटेड फॉर्म्स वो हो जाएंगी, प्रीडोमिनेंट हो जाएगी. और अगर प्रीडोमिनेंट हो जाती हैं तो क्या होगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म्स तो हमारे पास बचे अनएब्जॉर्बेबल होती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी. When pH is greater than the pK, the deprotonated forms are predominant and deprotonated forms are required for lipid solubility. So summarizing the things, the uncharged form is more lipid soluble. More of a weak acid will be in the lipid soluble form at acidic pH. More of a basic drug will be in the lipid soluble form at alkaline pH. pH partition. Weak acids tend to accumulate in compartments of relatively high pH. Opposite attracts. Now weak acids की कम pH होगी, वो high की तरफ attract होगी, उसमें accumulate हो जाएंगे. Same goes for weak bases. Weak bases tends to accumulate in compartments of relatively low pH. To increase the urinary excretion of acidic drugs, we make the urine alkaline. To increase the urinary excretion of alkaline drugs, we make the urine acidic. This is also called ion trapping. क्या होता है कि एसिड वाली ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन. एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी होगी, ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गई, उसको हमने बॉडी से निकाल लिया तो वो अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स हायर एल्कलाइन मीडियम जिसकी हाई पीएच होगी, तो हम यूरिन को अल्कलाइन करेंगे, वहाँ से ये किडनी में एब्जॉर्ब होगी, एक्सक्रीट आउट होगी, यूरिन में ट्रैप होगी और बॉडी में बाहर निकलेगी बॉडी से. Let's see clinical application of this. Almost all drugs are filtered at the glomerulus. If a drug is in lipid soluble form, it will be reabsorbed by the renal tubules by simple passive diffusion. ठीक है जी, तो हमने उसे water soluble करना है, जैसे मैंने पहले बताया था. To increase excretion of a drug, it is important to prevent its reabsorption from the tubules. Weak acids will be excreted faster in alkaline urine. Weak bases will be excreted faster in acid urine. Let's see its clinical application in aspirin toxicity. Bicarbonate and acetazolamide each increases urine pH and hence increases salicylate elimination. But bicarbonate reduces, whereas acetazolamide increases distribution of salicylate to the CNS. तो कौन सी प्रेफर करेंगे हम, बाइकार्बोनेट करेंगे. ठीक है. IV sodium bicarbonate causes increase in plasma pH. Weakly acid is extracted from the CNS to plasma, whereas acetazolamide decrease कर रहा है plasma pH को, causes weakly acidic drugs to become concentrated in the CNS and therefore causes increased neurotoxicity. ये दोनों बातें बताने का मकसद ये है कि अगर आपको चॉइस आती है कि एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो गई है, बाइकार्बोनेट आपने यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन करना है, तो आपके पास ऑप्शन है बाइकार्बोनेट और एसिटाजोलामाइड. अब क्या है, दोनों अल्कलाइनाइजेशन तो कर रही हैं, यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन तो सॉरी कर रही हैं, मगर प्रेफरेबल कौन सा है. एसिटाजोलामाइड इसलिए नहीं है कि वो तो सारी अकोमुलेट सीएनएस में कर देगा ड्रग को, वहाँ पे वो फिर मसला हो जाएगा, तो हमें बाइकार्बोनेट चाहिए जो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करे. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बाइकार्बोनेट. आयनाइजेशन क्यों कर रहे हैं, यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन या एसिडिफिकेशन क्यों कर रही हैं, so that ionized drugs get trapped and then can be easily excreted out from the body. So here's the difference. Weak base is trapped in acidic environment such as amphetamine. ट्रीट ओवरडोज विद अमोनियम क्लोराइड, उसमें हमने एस्पिरिन की बात की जिसमें हम यूज़ करें बाइकार्बोनेट, मगर अगर हमारे पास वीक बेस है एम्फेटामीन तो हम उसे करेंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, उसको ट्रैप करवाएंगे और एक्सक्रीट आउट करवाएंगे.
Weak acids are trapped in basic environment easily. Phenobarbital, methotrexate, tricyclic antidepressants, aspirin as examples of weak acids. Their overdose can be treated with bicarbonates. Sites of pH difference in the body, इसकी significance तो क्या है? It help in causing trapping or reabsorption, such as stomach and small intestine. The body fluids in which pH differences are from blood, pH is our breast milk. इसलिए कहते हैं कई ड्रग्स हैं जो एक्यूमुलेट हो जाती हैं ब्रेस्ट मिल्क में. क्यों? और वो जो आपका नियोनेट होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उस पर इफेक्ट करती है जो ब्रेस्ट फीड पे होता है. तो क्या करती हैं कुछ ड्रग्स, वो ये यही है कि मीडियम पीएच चेंज होता है. वीक एसिड है तो वो बेसिक में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, और अगर बेसिक है तो वो एसिडिक में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है एक्वस ह्यूमर में, वजाइनल एंड प्रोस्टेटिक सेक्रेशंस में. Aspirin's pKa is 3.5 and in stomach pH is 1 to 1.5, is ionized and lipid soluble and diffusible and therefore readily absorbed. ठीक है, डिफरेंस है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है. अनआयनाइज्ड फॉर्म इज एक्चुअली मोर लिपिड सॉल्युबल, और हमने यही कहा था कि एसिडिक जो है, एसिडिक ड्रग्स जो हैं एसिड मीडियम में एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, और बेसिक जो हैं वो बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होंगी. ट्रैप वो ऑपोजिट मीडियम की तरफ होंगी. Aspirin enters the gastric epithelial cells which have pH of 7.4, which ionize because of higher pH and will be localized there. Ion trapping concentrate and enhance the gastric mucosa. एस्पिरिन की 3.5 थी, जैसे सर ने बताया कि 1 डिग्री 2 डिग्री कम होगा, मतलब 3.5 से 2.5 होगा, 2.5 से 1.5 होगा, तो क्या हुआ 2 का होया ना, तो 99% ऑफ द ड्रग ऑफ आवर ड्रग इज अनआयनाइज्ड, तो वो फुली लिपिड सॉल्युबल होके स्टमक में चली गई. अब स्टमक से आगे इंटेस्टाइन्स का क्या हुआ कि वहां पे पीएच डिफरेंस था, वहां पे जाके वो ट्रैप हो गई. 7.4 था ल्यूमेन का, वहां पे वो जब एक्यूमुलेट हो गई वो तो अब वाटर सॉल्युबल हो गई, आयनाइज्ड हो गई, और वो अब निकल ही नहीं पा रही. वो बेसिक मीडियम में 7.4 पीएच में 3.5 वाली एब्जॉर्ब हो एक्यूमुलेट हो गई, और वहां पे वो अपनी टॉक्सिसिटी देने लग गई, बैड इफेक्ट देने लग गई. ठीक है जी. टू डिटरमिन हाउ मच ड्रग विल बी फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स टू कंपार्टमेंट्स दैट डिफर इन पीएच. फॉर एग्जांपल स्टमक pH is 1 to 1.5, whereas blood की pH 7.4 है, तो वो एक जगह पे वो एब्जॉर्ब हो रही है, एक जगह पे वो ट्रैप हो रही है और अपनी टॉक्सिसिटी दे रही है. तो बच्चे ओनली आयनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स या pH ही नहीं अफेक्ट कर रही ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो इन डिटेल यू विल बी स्टडिंग ऑन सैटरडे एंड कमिंग मंडे. So these are effect of pH on drug absorption, blood flow to absorption site, total surface area available for absorption, contact time at the absorption surface and expression of G protein. ब्लड फ्लो क्या होगा, अब देखो एक चीज मीडियम की पीएच सेम थी वो एब्जॉर्ब हो गई, अनआयनाइज्ड फॉर्म थी, मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगी. ब्लड आया, ब्लड की पीएच डिफरेंट हो गई, 7.4 हो गई, उसमें वो ट्रैप हो गई, ट्रैप होने की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर. अच्छा, जो है वो एक छोटा मीडियम सरफेस एरिया छोटा है, उधर वो ब्लड फ्लो नहीं आया, और एक बड़ा मीडियम है, बड़ा सरफेस एरिया, उधर ज़्यादा ब्लड फ्लो है, वो ज़्यादा ट्रैप हो जाएगी. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपने मैक्सिमम इससे एक्सट्रैक्ट किया होगा. If you are unable to understand any of the concepts, so be free to contact me on your WhatsApp group or through any medium. So in a short while, after going through this lecture, you will get an assignment. Don't forget to submit on proper time.